The topic of discussion is macromolecules, and the subtopic is enzymes. Let's discuss what are enzymes. They are defined as the reaction catalysts of biological systems produced by living cells and are capable of catalyzing chemical reactions. Number one, they are the reaction catalysts produced by living cells, यानी कि ह्यूमन बॉडी में मौजूद सेल्स इन्हें खुद प्रोड्यूस करते हैं and thus they are capable of catalyzing chemical reactions. तो वो जितने भी chemical reactions हमारी बॉडी में हो रहे हैं उनका वो जो रेट है उसे वो स्पीड अप करते हैं. Each enzyme molecule possesses a region known as active site and the substrate binds itself with this active site. In this diagram you can see this is an enzyme. इसका एक particular portion जो है that is known as active site और उस active site से similar एक जो substrate है वो इसके साथ bind करेगी. Here we have a practice MCQ, the site of enzyme where substrate is attached called allostatic site, active site, medium site or posterior site, and the correct option is active site. Let's discuss the characteristics of enzymes. Enzymes are either proteins or contain proteins as essential components, and in addition require non-protein components which are also essential for their activity. Enzymes या तो solely प्रोटीन से मिलकर बने हो सकते हैं या फिर प्रोटीन्स के साथ साथ उन्हें एक नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी रिक्वायर होता है for their proper functioning. The protein component of the enzyme is called apoenzyme. Non-protein component is called cofactor or coenzyme. So in this diagram you can see this is the solely protein part. ये सारा का सारा जो part है वो प्रोटीन से मिलके बना हुआ है. That's why it's called apoenzyme, protein portion जो कि inactive है. बाद में इसके साथ एक coenzyme यानी कि cofactor non protein portion है जो कि इसको एक्टिवेट करेगा. That's why it is called an activator. वो जब इसके साथ आके अटैच होगा then substrate will bind it. इसे हम कहेंगे hollow enzyme यानी कि whole enzyme जो कि एक्टिव फॉर्म में होगा. फर्स्ट वी हैव एन एंजाइम जो कि प्रोटीन से मिलकर बना था लेकिन वो इनएक्टिव था. उसको एक्टिव करने के लिए उसके साथ एक कोएंजाइम बाइंड किया जिसे आप कोफैक्टर भी कह सकते हैं. डेट्स अ नॉन प्रोटीन पार्ट क्योंकि जब ये बाइंड होगा तो इसको एक्टिव करेगा. डेट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज एक्टिवेटर. अपोएंजाइम बाइंड्स विद कोफैक्टर एंड देन सबस्ट्रेट बाइंड करेगी एक्टिव साइट पे. दैट द होल कॉम्प्लेक्स वी कॉल इट होलो एंजाइम. अपोएंजाइम विल बी इनएक्टिव जबकि होलो एंजाइम जो होगा वो एक्टिव फॉर्म में होगा. और उसको एक्टिवेट किसने किया? एक्टिवेटर ने, डेट इज कोएंजाइम और कोफैक्टर. Let's see the details of cofactors. Cofactors include inorganic ions and complex organic or metallo-organic molecules. Cofactors में या तो inorganic ions आ जाते हैं या फिर they are made up of complex organic or metallo-organic molecules. For example, chrome oxidase contains iron as a coenzyme. Carbonic anhydrase contains zinc. Glucose 6-phosphatase contains magnesium. These are all inorganic ions, while many enzymes contain vitamins as cofactors, like nicotinamide vitamin and thiamine pyrophosphatase contains B1. These two enzymes, nicotinamide vitamin and thiamine pyrophosphatase जो हैं उसके साथ क्या होता है B1 और B1 एक विटामिन है. विटामिन एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं B1, B2, B3, B9, B12. तो इसमें से जो B1 होता है वो एज कोफैक्टर एक्ट करता है बहुत सारे एंजाइम्स के लिए. Here is a summary. कोफैक्टर्स जो हैं वो मेटल कोफैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं लाइक आयरन हमने पढ़ा, मैग्नीशियम पढ़ा, जिंक पढ़ा, या फिर वो ऑर्गेनिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं. इफ दे आर मेटालिक कोफैक्टर्स तो वो मेटालो एंजाइम्स हो सकते हैं या मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स हो सकते हैं लाइक
क्रोम ऑक्सीडेज जिसे आयरन एक्टिवेट करा था। अगर तो वो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं, so they might be coenzymes or prosthetic groups. So in the previous slide we have said that कि अगर cofactor एक organic molecule है, we will classify it as a prosthetic group or coenzyme. So let's see in detail what is a prosthetic group or a coenzyme. Some enzymes require cofactors to be active. Cofactors are a non-protein component of an enzyme and it can be organic molecules जैसे हम coenzymes कह रहे हैं, and inorganic molecules जो हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं. So now our point of interest is prosthetic group or coenzymes. So if cofactor which is organic in nature is permanently attached, in this case we will call it as prosthetic group. अगर तो cofactor जो कि एक organic molecule है वो किसी enzyme के साथ permanently attach है, then we will call it as a prosthetic group. For example, एक फ्लेवोप्रोटीन है, उसके साथ FAD permanently attach है. FAD जो है वो एक organic molecule है, permanently attach है. That's why we will call it as a prosthetic group. But if the cofactor which is organic in nature is temporarily attached, which detach after a reaction, जब reaction खत्म होगा तो वो detach हो जाएगा और वो फिर किसी दूसरे एंजाइम के साथ रिएक्ट करके किसी दूसरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे. सो वो कोफैक्टर जो कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर नेचर में वो जब टेम्परली अटैच होगा किसी एंजाइम के साथ, देन वी विल कॉल इट एज अ कोएंजाइम. सो कोएंजाइम जो है वो टेम्परली अटैच होगा, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो परमानेंटली अटैच होता है, वो डिटैच नहीं होता. जबकि कोएंजाइम जो है जब रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा, प्रोडक्ट्स बन जाएंगी, तो वो एंजाइम से डिटैच हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, डिहाइड्रोजनेसिस इज एन एंजाइम जो कि प्रोटीन कंपोनेंट होता है, उसके साथ NAD जब अटैच होता है, here we call it as coenzyme, क्योंकि जब रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, प्रोडक्ट्स बन जाएंगी, NAD जो है वो डिटैच हो जाएगा और वो किसी और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा. So NAD is an example of coenzyme while FAD is an example of prosthetic group. Another question is the non-protein part of enzyme is called apoenzyme, holoenzyme, prosthetic group or coenzyme, and the correct option is prosthetic group. So next is the classification of enzymes. We have 6 main classes: oxidoreductases, transferases, hydrolases, lyases, which also called as syntheses, isomerases and ligases. So first we will define oxidoreductases. They are the enzymes which catalyze oxidation reduction reactions, and important subclasses are dehydrogenases, oxidases, peroxidases, reductases, monooxygenases and dioxygenases. Next is transferases. These are the enzymes which bring about an exchange of functional group such as phosphate or acyl between two compounds. And important subclasses of this enzyme are C1 transferases, glycosyl transferases, aminotransferases, and phosphotransferases. Next enzyme is hydrolases. These are the enzymes which catalyze hydrolysis. They include proteases, जिसे हम proteolytic enzymes भी कहते हैं, and important subclasses are esterases, glycosidases, peptidases, and amidases. The fourth class is lyases. These enzymes catalyze the addition of ammonia, water, or carbon dioxide to double bond or removal of these to form double bonds. For example, phosphoglyceromutases. And important subclasses of this are CC lyases, CO lyases, CN lyases, or CS lyases. Next is isomerases. These are the enzymes which catalyze the transfer of groups within molecules to yield isomeric forms of the substrate. For example, एक enzyme use होता है fumarase in the conversion of fumaric acid to malic acid. And the subclasses are epimerases, cis-trans isomerases, intramolecular transferases.
And the last class is ligases. These are the enzymes which link two molecules together through the breaking of high energy bonds. For example, acetyl SCOH जो कि carboxylase और succinic thiokinase है. और इसकी important classes जो हैं वो CC ligases, CO ligases, CN ligases and CS ligases. The question is, the enzyme which help in breakdown of compounds are hydrolase, transferase, oxidoreductase, and isomerase. And the correct option is hydrolase. Another question is stated as acetyl SCOH, a carboxylase or succinic thiokinase, is example of lyases, isomerases, ligases, or transferases. And the correct option is ligases. Another MCQ is peroxidase is subclass of isomerases, oxidoreductases, hydrolases, and lyases. And the correct option is oxidoreductases. So this was all about the lecture. I hope you have understood it well and thank you so much.